Now we are going to derive some simple relation between different parameters. This is the transistor current equation. I is equals to IC plus IB. As we know that IC over IE is equal to alpha. So IE can be substituted as IC over alpha. And we know that beta is equals to IC over IB. So IB can be written as IC over beta. So this equation number 1, इसमें हम IC को पुट कर सकते हैं, IE को पुट करेंगे IC over alpha और IB को पुट करेंगे IC over beta. So this will become IC over alpha is equals to IC plus IC over beta. So taking IC common and dividing on both sides, IC over alpha is equals to IC into 1 plus 1 over beta. अगर हम IC को कैंसिल कर दें बोथ साइड्स पे तो 1 over alpha is equals to 1 plus 1 over beta. इस रिलेशन से आगे हम दो तरह से जा सकते हैं अगर हम अल्फा और बीटा को डिफाइन करें. सो 1 over alpha minus 1 is equals to 1 over beta. Taking LCM, इस इक्वेशन से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा ओवर बीटा प्लस 1. और अगर इसे आप थोड़ा सा रीअरेंज करें तो बीटा कैन बी रिटन एज अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा. So as we have written that beta is equals to alpha over 1 minus alpha, and we have also derived that ICEO is equals to ICB over 1 minus alpha. Using that 1 over minus alpha is equals to beta plus 1. So this will be equals to ICEO is equals to